Assalamu alaikum. I start with the great name of Allah Pak, who is the most beneficent and the most merciful. Kindly recite Durud Pak. Today I will discuss here conduction conversion of Unit 8, transfer of heat. What do you mean by transfer of heat? The word transfer means मुंतकिल होना and heat means गर्मी या दर्जे हरारत, यानी हरारत का मुंतकिल होना एक मॉलिक्यूल से दूसरे मॉलिक्यूल्स तक या एक बॉडी से या एक ऑब्जेक्ट से दूसरे ऑब्जेक्ट तक. Now question number 1 in your notes on page number 32. What is conduction? Write some and application of conduction from daily life. कंडक्शन क्या है और डेली लाइफ में रोज़मर्रा की ज़िंदगी में हम इसको किस तरह अप्लाई कर सकते हैं. द प्रोसेस ऑफ हीट ट्रांसफ़र फ्रॉम वन सब्सटेंस टू अनदर सब्सटेंस थ्रू डायरेक्ट कॉन्टैक्ट इज़ कॉल्ड कंडक्शन. अगर सॉलिड पार्टिकल में हीट ट्रांसफ़र हो तो हम इससे कंडक्शन कहते हैं. सो कंडक्शन है क्या? कंडक्शन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हीट ट्रांसफ़र हो रही है सिर्फ और सिर्फ सॉलिड पार्टिकल्स में, यानी एक मॉलिक्यूल से दूसरे मॉलिक्यूल्स तक. नाउ देयर आर अ फ्यू एग्जांपल्स ऑफ कंडक्शन. अ मेटल स्पून इन अ हॉट सूप, ice melting in your hands, holding a hot cup of coffee. Some application of heat conduction from daily life are: when a shirt is placed on an ironing board, heat from the iron is conducted to the shirt. This makes it easy to iron out all those unapplying wrinkles and makes the shirt look neat. Another example, when the engine of a car is turned on, the bonnet becomes warm due to the conduction of heat from the engine to the hood of the car. जब हम कार के इंजन को टर्न ऑन करते हैं तो कार के बॉनेट भी गर्म हो जाता है, और ये किस वजह से होता है? कंडक्शन ऑफ हीट की वजह से होता है. तो इंजन जो है वो सॉलिड पार्टिकल है. इंजन के मॉलिक्यूल पहले हीट एब्जॉर्ब करते हैं एंड देन ट्रांसफ़र करते हैं बॉनेट के मॉलिक्यूल्स तक. कन्वेंशन, इट इज़ अनदर टाइप ऑफ हीट ट्रांसफ़र. इट टेक्स प्लेस इन गैसेज एंड लिक्विड. अगर हीट ट्रांसफ़र हो गैसेस एंड लिक्विड में तो हम इसे कन्वेंशन कहते हैं. हैव यू एवर ऑब्जर्व हाउ वाटर स्टार्ट टू बबल अप एंड मूव्स हरिडली व्हेन इट इज़ हीटेड? दिस इज़ बिकॉज एज द वाटर इज़ बीइंग हीटेड, द वाटर एट द बॉटम ऑफ द पैन gets heated first and become less dense. This less dense water moves upwards from the bottom of the pan and the colder and denser water takes its place. This process goes on until all the water gets boiled. This process of heat transfer is used in domestic geysers to heat up water. कभी आपने ऑब्ज़र्व किया है कि वाटर में बबल्स क्यों बनते हैं और इतनी जल्दी मूव क्यों करते हैं? फॉर एग्ज़ाम्पल, लुक एट द पिक्चर. ये हमारे पास पेन है और इसके नीचे जितने भी, यानी कि बॉटम में जो भी पानी है वो फ्लेम की वजह से गर्म हो जाएगा, और जो मॉलिक्यूल्स हैं वो क्या करेंगे? वो अपवर्ड मूव करेंगे बिकॉज ऑफ इट्स lower density or less density. So this less density water moves upward from the bottom of the pan and the colder and denser water takes its place. This process goes on until all the water get boils. इस process से क्या होगा कि तमाम पानी जो है वो boil हो जाएगा, गर्म हो जाएगा. जब हमारे पास पेन में बॉटम की तरफ वाटर जो है वो हॉट हो जाएगा और जो मॉलिक्यूल्स हैं वो ऊपर की तरफ आ जाएंगे. दिस प्रोसेस इज कॉल्ड कन्वेक्शन इन लिक्विड्स. अगर सॉलिड में हीट ट्रांसफ़र हो रही है तो हम इसे कंडक्शन कहेंगे, और अगर लिक्विड और गैसेस में हीट ट्रांसफ़र हो रही है तो हम उसे कन्वेंशन कहेंगे. थैंक्स टू अल्लाह ऑन लर्निंग समथिंग न्यू. स्टे सेफ, स्टे होम, लव योर पेरेंट्स. अल्लाह हाफिज़.